Hello and a very good afternoon, kids. How are you doing today? So, in today's lesson, what are we going to start? This would be more or less we are done with algebra because we have done almost everything, solving equations, expanding, understanding different types, and everything we've done. So, now we are going to learn, go ahead to have an understanding of factorization, and this is lesson 1, very first part of factorization, right? So just type in your names here so that we can interact best. And as I said, we are going to be having factorization today. So let's get started with factorization. What all does this lesson cover, and what are we going to be learning today is factorization of binomials with 2 terms, 3 terms, and grouping and factorizing. Okay. Now, before we really go ahead, let's see who's the winner. The winner is Rayansh. The winner, congratulations winners, congratulations. That's great. Okay, now let's move to the understanding of factorization. So when we talk about factorizing, so let's not that like inside algebra, you already are clear and aware of what this term states. So when we talk about factorization, we will say for example, if I give you 6, what are the factors of 6? It could be 2 and 3 because 2 times 3 is 6. It could be 1 and 6. These all are the factors. So the factors are the numbers. When you multiply them together, you get the answer. You get that number itself. So if I talk about factors of 6, you will say 2 and 3 are the factors of 6. Why? Because on multiplying them, you get 6 only. You get the same product. Same, 1 and 6 are the factors of 6. Once you multiply them, you get 6. Now, when we talk about algebraic terms, if I say how about x squared? x squared के factors क्या होंगे? Simple, x को x से multiply कर देते हैं. X times x is x squared. So the factors of x squared, x and x. अगर मैं पूछूं x, y, you have, what are the factors of x, y? X and y. X times y gives you x, y. ठीक है? Make sense? Similarly, अगर हम बात करते हैं x squared plus 2x, अभी हम वहाँ पर तो हमारा मोनोमर था, मोनोमियल था बिकॉज 1 टर्म था. यहाँ पर बाइनोमियल आ गया, 2 टर्म्स हैं. तो 2 टर्म्स को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं? 2 टर्म्स को फैक्टराइज करने के लिए हम ये देखते हैं कि दोनों में व्हाट इज दिस इज़ द प्रोडक्ट. ये आपको समझ आ रहा है? तो मल्टीप्लाई क्या हुआ था जब ये आंसर आया? तो हम क्या करेंगे? हम ब्रेक करेंगे. दिस इज एक्स देयर, सो कैन वी रियली राइट इट एज, आई विल यूज द कलर कोड. सो 2 टाइम्स, इट्स नॉट पॉइंट, इट्स टाइम्स, 2 टाइम्स एक्स. ठीक है? तो इधर पे भी क्या हम एक्स स्क्वायर्ड को हम इस तरह से एक्स टाइम्स एक्स में ब्रेक कर सकते हैं? यस और नो? सो एक्स इज समथिंग विच इज़ द कॉमन वेरिएबल. एक्स इज समथिंग विच इज़ कॉमन टू बोथ ऑफ देम. एक्स को हम एक बार ही लिखेंगे, दिस रेड एक्स. लेट मी जस्ट अगैन कलर कोड द थिंग. सो इस एक्स को हमने लिखा एक बार आउटसाइड द ब्रैकेट. अभी हम ब्रैकेट लेंगे बिकॉज ये वाला x हमने लिख लिया है बाहर. दिस वुड बी x इनसाइड एंड वट एवर द ब्लैक थिंग इज वो आपको लिख लेना है. वट इज़ रेड? द रेड इज़ द कॉमन थिंग. कॉमन को आपको आउटसाइड द ब्रैकेट लिखना है. वेन एवर वी राइट समथिंग आउटसाइड द ब्रैकेट, इसका मतलब दिस इज समथिंग कॉमन टू एवरी थिंग इनसाइड. ये ना कॉमन है, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी कनेक्टिंग विद ऑल द टर्म्स इनसाइड. तो इसको हम एक बार लिखते हैं, बाकी सारा हम कॉपी डाउन कर लेते हैं. तो लेट्स डू वन थिंग, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. इतना क्विकली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है. लेट्स ब्रेक इट डाउन फर्दर सो दैट इट मेक्स ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड.
तो पहले हम ना केवल कॉमन लेना सीखते हैं. तो अगर आपका क्वेश्चन है say for example you have x times x plus 4 times x. ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? x and x, right? 1x are, these are common. तो ये अगर हम इस x को बाहर लिखते हैं तो इनसाइड द ब्रैकेट क्या होगा? इनसाइड द ब्रैकेट फ्रॉम हियर यू विल, ये तो आउटसाइड चला गया ना, तो ये होगा x टाइम्स x और वहाँ पर द 4 इज थिंग दैट इज लेफ्ट, x आउटसाइड. डज दैट मेक सेंस? क्या ये चीज़ समझ आ रही है आपको? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Yeah, so this is how we are going to be breaking our content. If I say 2 times x plus 2 times 5, what is common here? 2 outside लिखते हैं, what is left is getting written inside, so x plus 5. बस अभी हम इस पे फोकस करते हैं. लेट्स फोकस ऑन दिस. अभी फुल फैक्टराइजेशन पे हम फोकस नहीं करेंगे. करेक्ट? Okay, so what we did here, see 2 was common, तो हमने 2 को, whatever is common you see in every term, आप उसको बाहर लिखोगे. inside the bracket what is left you are going to write, वो common वाला चीज़ बाहर लिखेंगे. does that make sense? Okay, that's great. अभी मैं I'm gonna give you a few questions to try. So if I say x times y plus 4 times x times z. This is the first question you have to try. The second question is the third question is and the last question is हम क्रॉस भी लाइक यू नो प्रोडक्ट सिंबल भी ऐड कर सकते हैं नंबर्स के बीच में. ठीक है, तो अभी ट्राई करते हैं इसे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राइंग द आउट. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ कॉमन? इट्स x विच इज़ कॉमन. अंडरलाइन करते हैं. वी हैव टू राइट दैट आउटसाइड. इनसाइड वी गोना बी राइटिंग व्हाट इज़ लेफ्ट. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या कॉमन है? x वी हैव हियर, वी हैव देयर. y वी हैव हियर, वी हैव देयर. तो जो कॉमन है उसको बाहर लिख लेते हैं. वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन अगैन ब्रैकेट को फिल करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव x here, that is it. इतना ही कॉमन है. वी हैव रिटन ब्रैकेट, वी गोना बी फिलिंग. 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है. सो 6x हमने लिखा और ब्रैकेट इज समथिंग वी विल बी फिलिंग. ठीक है, तो जब हमने x कॉमन ले लिया, यू आर लेफ्ट हियर, you are left with y only, plus there you are left with 4z. Make sense? सेकेंड क्वेश्चन में एक्स वाई तो आउटसाइड है, आपने z लिखा प्लस 7x. वेरी गुड. थर्ड क्वेश्चन 5y प्लस 8x. लास्ट क्वेश्चन यू हैव नथिंग लेफ्ट, तो यहाँ पर 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट. नो, 1 प्लस 5y. So this is how we are learning to expand the thing, factorize the thing, but it's not the full factorization, it is assisted factorization. Does that make sense? Okay. ठीक है, तो अभी
कंप्लीट फैक्टराइजेशन देखते हैं. इफ आई गिव यू द क्वेश्चन, अभी व्हाट वी हैव सीन, आई हैव गिवन यू इट इन ब्रोकन फॉर्म. नो, now we'll be having it as, say for example, x squared, maybe 5x squared plus 4x. कैसे करेंगे इसे? So you will write 5x squared can be written as x times x plus 4x. What's common? Underline x and x. You will take x out. Inside you have 5x plus 4. And that's what your answer is. Correct? Let's move to the next question. If I say 2x squared y plus 3xy, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं. Just be very quick to try that. Very quick to try that. Yeah. Okay, let's do it together. So we have 2 x squared can be written as x times y. The next term we have 3 times x times y. Let's underline what's common. Common meaning दोनों terms में है. So we have x here, we have x here. We have y here, we have y there. So outside the bracket we're going to be writing the common things. x, y हमने बाहर लिखा. तो first term में what is left which is not underlined? It's 2x. Second term में what is left which is not underlined? It's just 3. 3 underlined नहीं है, बाकी सारा underlined है. That's what your answer is. Do you get that? अगर आपको समझ आ रहा है तो आप प्रैक्टिस करो. If I say 6x squared plus 5x, you try this. 4x squared y plus 7xy. चलो, you try the things written in blue. Just 20 seconds, max to max, and tell me what do you get in here. So from the first one, let's break it down. So it will be 6 times x plus 5 times x. X is something we can underline here, no? So you take x common, inside you have 6x plus 5. That's what your answer is. Here 4 times x times y plus 7 times x times y. X, y. Let's write xy outside. You have 4x plus 7. That's what your answer is. Are you getting this? Let's do 2 more questions. If I say 12 x plus 18y, अभी वेरिएबल तो कॉमन नहीं है, दैट इज़ ट्रू. तो क्या नंबर कॉमन है? द कोफिशिएंट ऑफ दीज वेरिएबल्स. सो 12 को हम 12 and 18, like let's break it down. So we can say 2 times 3, no, times x. So first को हमने ब्रेक कर लिया, सेकेंड को ब्रेक करेंगे 2 times 3 times y. What's common? 2 common है, good, और 3 common है, good. तो जो common है उसको outside लिखते हैं, 2 times 3. Inside you are left with 2x plus 3y. 2 times 3 is nothing but 6.
2x plus 3y. So the best thing is ना कि आप इसका या तो LCM फाइंड आउट कर लो, द सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज, क्योंकि अभी आप सीनियर ग्रेड्स में हो, सो यू कैन ईजिली डू दीज थिंग्स. जूनियर्स ऑब्वियसली आई वुड से कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो उसका और फिगर आउट करो व्हाट इज़ कॉमन, बट यू कैन सिंपली टेक द LCM ऑफ 12 and 18. दैट इज़ इट. इफ आई से 16xy plus 20z squared. Okay, try this question. 16xy plus 20z squared. How will you do this question? Just think. When we have no variables common, you have to focus on numbers. आप मेरे को इसको फैक्टराइज करके just type in the answer here. Okay, let's see. 16, if you're not understanding the LCM, like least common multiple, I mean, sorry, it's not the LCM but the HCF. Did I say LCM there? It would be the HCF. 16 and 20. So 2 times 16 can be written as 2 times 2 times 2 times 2 times x times y plus 2 times 2 times 5 times z times z. This is what we have. 2 common hai, another 2 common hai. That is it. So we will have 2 times 2, that is nothing but 4. Outside the bracket, 4xy plus 5z squared. Right? 4xy plus 5z squared. And this is what the answer for the question is. If I give you, now let me change the terms. If I give you 3 terms here, say for example 2x plus 5xy plus 7xz, right? And you have to factorize this. That means take common out. How will you do that? What is the common term here? What is the common variable here? Whatever you say. Can you see anything common here? जो सारे terms में हो. You have x here, you have x here and x here. So we have x common. If the first term has only 2 left, second term has 5y left, and the third term has 5z left. And that is what your answer is. Let's try another question. If I say 5xy plus 5xz plus 5xp. Okay. अब भी आप मेरे को बताओ. Just copy this down. What is common? Underline और उसे हमें outside the bracket लिखना है. So we have 5x, 5x and 5x common everywhere, isn't it? So let's write 5x outside, y plus z plus p will be written inside. Does that make sense, kids? Yeah. So this is how we factorize things. Let's do a few questions. Okay. So I'll add a few questions here. If I say 2x squared plus 7xy
Okay, let's do this one. Factorize and write. Factorizing is nothing but taking the common out. हम हमेशा ब्रैकेट्स में लिखते हैं और आउटसाइड द ब्रैकेट कुछ कॉमन नंबर लिखते हैं हम, लाइक यू नो द कॉमन, इट कुड बी अ नंबर, वेरिएबल, एनीथिंग. सो व्हाट इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स? 2x स्क्वायर्ड और 7xy में कॉमन क्या है? x. कैन यू रियली आइडेंटिफाई विदाउट ब्रेकिंग इट डाउन? अभी मैंने इसे इस तरह से नहीं लिखा, नो, आई मीन आई डिडंट राइट इट as 2 times x plus 7 times x times y. Even if I'm not writing like this, will you be able to identify that x is the common thing? That's good. We have x here, we have x here. So x is common. We've written outside. Inside, you're going to be writing what is left. So अभी आपके पास 2x first term में बचा हुआ है and 7y is in the second term. That's what your answer is. Good job. That's correct. That's correct, Kriti. Now, if I give you another question, question number 2, if I say 10x y squared plus 15 x squared y. Okay, a little tricky, very little. If you break it down, there isn't any trick. Try. 10xy squared plus 15x squared y. This is what you have to do. आपको क्या करना है? आपको break down करना है question को as I've done here, you know, जैसे यहाँ पर किया ना मैंने. The particular term को आप break down करो, whatever is like the factors are. Let's try this question. Ten y squared plus 15x squared y. So 10xy squared, let's break it down. 10 can be written as 2 times 5, then times x times y times y, plus 15 can be written as 3 times 5, then times x times x times y. ठीक है? We have written it like this. Now just take the common out. अभी common क्या है? 5. Underline that x. Underline that y. So what you underlined उसको एक बार लिखते हैं बाहर. 5xy outside. Bracket में हम लिखेंगे what is not underlined. So you have 2y left plus you have 3x left, and that's your answer. Simple. Oh, okay, Kriti, I'll be waiting for your, I want to do the next question, right? I will wait for your answer. Okay, now let's try the third question. I know it takes some time. I will give you the time, don't worry. I'll give you entire 1 minute. So if I say 18 x squared y squared plus 24 x y
squared z or z. Try this. And let me set the timer for entire 1 minute. Okay, so once you are done, are you still doing, Kriti? Just drop yes ma'am. I'll be waiting for you for the another question number 3. Let's try the 18. We can write, just break 18 down. Students, if you are still doing, you feel like you are done in 30 seconds, you're going to be texting me. I will wait. Otherwise, okay. So, let me give you next 30 seconds, Kriti, to finish that. So Kriti says 6xy plus 3x plus 6xy outside the bracket, inside 3x plus 4z. Let me write and let's check if it is correct, Kriti. You said 6xy outside the bracket, then you are saying 3x plus 4z. Okay. Let's see. So 18, we can break 18 as 3 times 6 times x squared can be written as x times x, y squared can be written as y times y, plus 24 4 times 6 times x times y times y times z. Okay, let's underline. So we have 6 and 6 common, we have x and x common, we have y and y common, right? So let's write down what's common outside. 6 x y. What are we left with? We are left with 3, not underlined, x and y, plus 4 y and z. Right, Kriti? So the best way is to really break them down, you know, x squared, x times x, y squared, y times y. 24, 4 times 6, that is fine. x times y times z. अभी अंडरलाइन करेंगे, जो अंडरलाइन नहीं है वो सारा कुछ हमें इनसाइड द ब्रैकेट लिखना है. Are you understanding that? Right, you can understand the difference between the right answer and your answer, what you missed. एक बार फिर से try करते हैं, but you were very close. That is good.
Next question, let's try. If I say 20 x squared y squared z plus 15 x y x cubed y squared z squared. Just remember that you have to break down, like I have, ये वाला step miss ही नहीं करना है आपको. You have to definitely write this step. You will never make a mistake. अगर आप वो step miss कर रहे हैं, then there are chances कि you are just trying to do direct, so it could be a mistake there. ठीक है? Okay, try this question quickly. Okay, I'm waiting. Once you are done, just text me the answer. And this will be the last question for the lesson today. Okay, I have it from Kriti. 5xyz. Let me just copy down your answer. So you are saying the answer as 5x z. No, sorry. 5xyz outside the bracket. Inside you have
4xy plus 3xxyz. 4xy plus 3xxyz. Okay. 4xy plus 3xxyz. Okay, this is what you're saying. Let's try. 20 we can write it as 5 times 4. X squared can be written as x times x. Y squared can be written as y times y. Z is only 1 plus 15 can be written as 5 times 3 times x times x times x times y times y times z times z. Okay, अभी हमें क्या करना है? We will underline whatever is common. You have 5 common, 5 common, not 4. You have x common, x common. You have another x common, another x common. You have y common, y common. Another y common, another y common. You have z common, z common. तो मेरे को लगता है कृति आपने another y, another x ये common नहीं लिया ना? ओके, सो आउटसाइड हम वो लिखेंगे जो सारे हमने अंडरलाइन किया है. सो 5 टाइम्स x टाइम्स x टाइम्स y टाइम्स y टाइम्स z. दिस इज़ गोइंग टू बी आउटसाइड. इनसाइड यू ओनली हैव, यहाँ पर क्या अंडरलाइन नहीं हुआ? 4 प्लस यहाँ पर 3x एंड z अंडरलाइन नहीं हुआ. जो अंडरलाइन नहीं हुआ उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जो अंडरलाइंड है वो हम बाहर लिखते हैं. सो x एंड x को हम x स्क्वायर बोलते हैं नो. सो हम 5x स्क्वायर्ड, y एंड y वी कैन राइट y स्क्वायर्ड एंड z. एंड इनसाइड यू हैव 4 प्लस 3xz. आर यू गेटिंग दिस? Yeah, I'm understanding your answer. I'm completely understanding. Are you understanding the explanation now? Are you understanding? Right, that's good. Okay kids, so we will sit back in our next lesson. In the meantime, you will check your, you will just really start right from scratch, like if you joined in between, in the middle. So आज का lesson फिर से आप start करो and re-watch the same video so that you are going to be revising, and in next lesson we will be sitting stronger. We will be going ahead in factorization, discussing in next Sunday. Till then, bye-bye, take care, bye.